सभी को मेरी तरफ से छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। I am Shaurya Pratap Singh, the Joint Secretary of the Joint Secretary of Manzil Society. Currently, I am pursuing BA Political Science Honours from Motilal Nehru College Evening, and I would like to give special mention to Mohammad Mubashir Alam, who had helped me in making this PPT, and I would like to also give special thanks to the GSTS team who had cooperated with me and making this talk possible. And I would also like to thank to the Dr. Manisha who had guided me throughout this talk. So with that, my topic of today's talk is Youth Catalyst of Change in Rapid Evolving Bharat. So with that note, I will start with one quote. The future belongs to those who believe in beauty of their dreams. Basically, the future will be belonging to those who will be who will have a confidence in their dreams. So with that note, I will start my talk session. So my today's talk session content will be introduction. First, we will be dealing with introduction. After that, we will be having understanding of the theme, what is basically my theme dealing is, and the third topic will be Bharat, a nation in transition, and fourth topic will be youth as agents of social change, and fifth will be youth in nation building. So this and six will be challenges before the youth. These are the major 6 points of my today's talk, and this 7, 8, 9 are some of the subtopics of this main theme. So with that, I would like to start my introduction. Uh, Youth as catalyst of change in rapid evolving India. India today stands as a turning point in history. A nation, a nation of over 1.4 billion people, where youth from a major part of structure. For example, there are over 382 million young people age group of 10 to 24 as per the data of UNFPA report. We, the youth, are not just the witness to change. We are the driver, dreamers, and doors shaping the destiny of New India. So, with that, I would like to jump on a second theme, which is understanding the theme. This is very important because if we will not have a basic idea of what is basically theme is, then we will not able to understand the whole topic. So for that I had divided this theme in two parts. First we will understand what is basically youth and who should be called as youth, and second part basically is catalyst, what is basically catalyst in the main theme. So with that, first I would like to tell what is basically youth. As per the National Youth Policy of Government of India, the age group of 15 to 29 are said to be the younger age because this is the age where adolescence the child is becoming adult, and there has been adulthood marked by the physical, mental and social economic development, due to which the government has put this age criteria 15 to 29 as official age criteria for the youth population of India. So that is how we can understand who is basically called as a youth. After that, I would like to tell what is basically catalyst is. Catalyst word basically means, as per the layman's term, basically means a catalyst is a person or thing that cause changes. Basically, the changer will be called as a catalyst. But this terminology has been derived from chemistry, so it is very important to understand in a chemistry manner. So as we all know, hydrogen plus oxygen become water, H2O become water. So when it will be in room temperature, when we will add platinum in it, then the process of becoming water will be rapid, due to which there will be a rapid change in it. So the platinum can be called as a catalyst. Here the platinum is catalyst. Similarly, youth act as a catalyst in society, accelerating change and progress.
So I hope now these two things are definitely clear. What is basically youth, who are the youth, and what is basically catalyst is. Now we will move forward toward a third major point, which is Bharat, a nation in transition. भारत आज हर क्षेत्र में पहले से कई अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से एक उपनिवेश से लेकर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने तक हाथ के चीजों से लगाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तक, गांव आधारित अर्थव्यवस्था से लगाकर ग्लोबल एंटरप्रेन्योर तक, यह परिवर्तन नई ऊर्जा, साहसिक विचार और निडर कार्यशैली की मांग करता है, जो हमारी युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी पहचान है. So here I would like to highlight certain facts and data through which we can understand that how Bharat, a nation, is transition, how Bharat is transitioning itself. So the first data is India's internet users base reached 886 million in 2024, expected to surpass by 900 million by 2025. As per the data of India Brand Equality Foundation. Second data is rural India account for 55% of internet users. So here it is very important to understand that how internet, AI and certain things are taking evolve in India, which showcases that India is doing something great for its future. And it is the youth who will going to put this thing for their future generation and who is going to work for the betterment of the future. And third major data is unemployment rate for a person age of 15 plus reduced from 6% in 2017-18 to 3.2% in 2023-24 as per the data of DGE 2025. So now you might be thinking that what is the impact of this? Youth energy is essential for India's rapid transformation, as we have seen that how India's internet database has been increasing day by day, which showcases that India is focusing more on the technical part, so that the here the youth are playing the major roles. We will further see certain examples through which we can understand that how India had worked for the upliftment or achieving the goal of Viksit Bharat by 2047. Now we will move forward toward the fourth major topic, which is youth as agent of social change. This is one of the biggest topic of today's talk. Why? Because this topic is going to cover a four major fields in which we will showcase that how youth had worked in five major fields. We will take the example of COVID-19, we will discuss about parliament and governance, we will discuss how social and environmental movement has been done by youth, and we will discuss how sports and music is reaching its peak because of the youth, and we will also discuss the certain world movement which was dominated by the youth itself. So let's discuss this thing one by one. Before that, youth have always been the torch bearer of social transformation. From Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose to modern reformer, today's youth actively participated in certain fields. But here we will be focusing about five fields only, which the first major field is COVID-19. As we all know, हम सब जानते हैं कि COVID-19 हमारे लिए कितना भयावह स्थिति रही थी. तो उस परिस्थिति में हमारे जो यंग यूथ है उसने किस प्रकार से स्टेप्स लिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि यूथ अपने आप में काम कर रहा है और अपनी हर शक्ति को देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है. ये भारत का यूथ है. मैं इस चीज को प्रस्तुत करूंगा कुछ डेटा और फैक्ट से, जिससे कि चीजें और भी क्लैरिफाई हो सके. सो विद दैट नोट आई विल स्टार्ट. सो एज पर द डेटा यंग वॉरियर कैंपेन 2021, almost 5 million youth have participated in COVID-19. COVID-19 की महामारी के टाइम पे 5 million youth ने अपने आप को एंगेज किया था, which is a very huge number. इतने बड़ी स्थिति में इतने सारे यूथ आके काम कर रहे हैं for the betterment of a nation, which showcases that youth is doing something. Second data is in Chhattisgarh 6,000 youth volunteer, which is almost 18 to 25 year of age, were trained for vaccination drive under UNICEF,
And the third major data is India lost about 41 lakh youth job in 2020. 27 million youth 20 to 30 year have lost their employment during lockdown, which is a major concern for us during the lockdown time. As we all know, lots of people have lost their job during the COVID-19. So this is also a dark reality of that phase. So now you all might be thinking that what are the impacts of this? Youth bridge awareness, vaccination, and trust between government, NGO efforts and local communities. With that कि हमें ये समझ में आता है कि यूथ अपने आप में गवर्नमेंट और एनजीओ के साथ कोलैब करके चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं. सेकेंड हमारा मेन सब टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट एंड गवर्नेंस. हियर वी विल बी फोकसिंग दैट हाउ यूथ इज पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नेंस सिस्टम ऑफ इंडिया. So let's see the contribution. The contribution is like this: civic engagement, youth representation, model parliament. Basically, we will see that we will see with the data and facts that how youth has been participated in governance system of India. As per the data of 2024, only 7 MPs, which is almost 1.3% in Lok Sabha, were 30 less than 30 year of age, which is a very small number for a big democracy of India. And we will 9.6% were for less than 40 year of age. So here we can understand that how youth is less engaged in this, but we will be seeing that there has been certain changes due to which we will be having idea that how youth is also taking step in the governance system of India. Youth India Parliament, 140 plus students from 50 schools has been participated, which is also a major number. So with that, we will be understanding the impacts. Youth are increasingly influencing democracy via forums, campaigns, and civic initiatives. So with that, we will be moving toward our third major topic, which is social and environmental movement. किस प्रकार ने यूथ ने सोशल और एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया है. जैसा कि हम सबको पता है, इतने सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होते रहते हैं पूरे इंडिया भर में. तो उसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए मैं कुछ डेटा और फैक्ट शो करूंगा, जिससे कि पता चलता है कि हाउ यूथ इज बिकमिंग कैटलिस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया. So the data is like this: thousands of youth has been participated in IYCN campaigning, which is related to environmental movements. And third is Tide Turner Challenges, which is organized by UNEP, in which 1,70,000 plus youth in India acted against plastic pollution. Here plastic pollution, because it is a major concern for the whole nation. Friday for Future India is one of the campaign in which 8,000 youth over 20 plus cities has been participated, organized under MDPIA. So these are the certain examples or data or facts through which we can understand that how youth is becoming catalyst. Now let's see the impacts of this, how the social movements and environmental movement is creating impact. Youth link local activism to national global environmental goals. एनवायरमेंटल गोल्स को अचीव करने में ये यूथ का मेजर रोल रहा है, ताकि हमारे फ्यूचर जो है, आने वाली फ्यूचर जनरेशन वो सिक्योर फील कर सके अपने नेचर के लिए. Our fourth major topic will be sports and music. How youth is engaging itself in sports and music. As we all know that there are certain sports, there are lots of sports in which youth is taking steps, and we all know the examples of it. We can take the example of Neeraj Chopra and many more who had achieved gold medals in Olympics for our nation, which is a very great for the betterment of a nation. So here I would like to mention the Spice McKinsey data, in which they had showed that 80,000 plus towns had been aware about the sports activities, which is very important, because most of the people in India are not aware about the certain sports, because there are less facilities and less facilities in India. So government is taking steps so that people can know about it, and
there will be a more number of participation in several games of India or worldwide. Even as per the data of Uttar Pradesh 2025, 500 youth has been got government job because they had participated in athletics games in Uttar Pradesh, and 80,000 youth club receive sports kittings, which as per the data of Times of India. So these are certain facts and data. Why I am focusing on facts and data? Because if we will be having idea of facts and data, then definitely we will understand that this thing is working properly. So this was our fourth point. Our fifth major point will be the world's movement. Just a minute. So our fifth major point is the how the youth has been participated in how the youth has been participated in overall world movements. We can take the example of Arab Spring of 2010 to 2012, where lots of students had protested against the government, and we can take the example of Hong Kong protest of 2019-20, US protest against the gun law of USA in 2018, and we can take the recent example of Nepal, how Gen Z had been protested against the government because of the ban in social media. And we can take the example of Chile protest, Iran protest. These are the certain protests which showcases that today's youth is making itself aware regarding global politics, global geopolitics, and all the issues which has been catered in the world. And with that note, we can understand that the youth connect local issues to global framework, making India an active participation in global change. So these are my five major sub fields which I had deal with. I hope you all had better idea about this thing. Now I will be moving over my fifth topic, which is youth in nation building. How youth is emerging as nation building. Here I will be focusing on NCC and NSS part, because I believe that these two organizations under Ministry of Defense and Ministry of Welfare is doing great in its field, which showcases that which also help in uplifting the youth. But before that, I would like to introduce my topic with this. Youth are the backbone of nation building. Energy, innovation, and service drive nation strength. India's 65% population below 35 years is the world's largest youth forces. Here we will be having certain examples of youth of India who had done phenomenal in their field. We can take the example of Ritesh Agrawal, the youngest billionaire of India. We can take the example of Arvindra Srinivas, the founder of Perplexity, and we can take the example of Kailash Vora and Adit Palechi, Zepto founder, and Nikhil Taneja, Yuva founder. These are some few examples which showcases that entrepreneur skills among the youth has been developing, and youth is working over its innovative ideas, which is automatically which is automatically better for the society. And here I would like to also mention certain political leaders who are doing phenomenal. We can take the example of Hardik Patel, Raghav Chadha. They are young politicians of India. As we all know, Raghav Chadha is very young, and many ISRO scientists who is doing phenomenal in their work. So this is all the aspect of this youth contribution in multiple spheres. Now I will like to highlight the two institutions, which is NCC and NSS, who had done a great job, who had done phenomenal work for upliftment of the youth.
Here I would like to start with NCC. NCC was founded in 1948, July 1948. Initially, before independence, it was under British. It was called as University Corps, but after independence, it became National Cadet Corps under Ministry of Defense. Currently, there are almost 1.3 million cadets enrolled under NCC, which is a very huge number. And NCC is also the uniformed world's largest uniformed organization. And here I would like to mention certain few camps of NCC, which is help in uplifting the youth. We can take the example of Ek Bharat Shresth Bharat camp, which has been initiated by Prime Minister Narendra Modi ji in 2016, and it is also a part of NCC as a camp, national camp. We can take the example of All India Vayu Sainik Camp, All India Thal Sainik Camp, All India Nau Sainik Camp. These all are the example of national camps, and one camp which is the one of the prestigious camp of NCC, which is Republic Day camp. This all are the camps which I believe that give an exposure to the students, because this is not just a camp. This is not just the thing which a student had done. This will help to uplift the student. Even as a cadet, whosoever will be in NCC, they might have feel about this. So this is all about the NCC aspect. Now we will moving forward toward the NSS, National Service Scheme, which was launched in 1969. It has almost volunteers of 4 million plus student had volunteered under NSS, and the main aim of NSS is to have social welfare in India, which includes like literacy drives, health awareness, blood donation camps, rural and environment service. This I believe that if individual, अगर मैं बात करूँ NSS की, अगर कोई individual NSS में है, तो उसको एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे वो सोशल सर्विस कर सके. जो भी आपको अपने नेशन से अभी तक मिला है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने नेशन को कुछ गिव करो, कुछ दो. तो आप ये सारी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके एक अपने आप को नेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हो. So that is how we had completed our fifth major topic. Now we will be seeing the sixth, which is also one of the most important topic of today's talk, which is what are the challenges the youth is facing. Basically here I will be talking about the challenges which youth has faced, major challenges which youth has faced in India. So with that, uh, so here I would like to highlight certain challenges like unemployment, skill gap reports, education, and political disillusionment, mental health problem. Mental health problem issue is a very big challenge for the youth. Digital distractions and overusage of developed resilience purpose for the self belief. So these are major challenges which I believe youth is currently facing. I would here like to highlight the certain data which will help to understand this topic in more factual manner. We can take the example of youth employment, which is almost 10.2% in 2023-24 data of money control. And second factual data is global youth unemployment, which is almost 13.3%, which is a very big number, very concerning number for us. And gap between education and employability, secondary education youth among unemployment rose from 35.2% to 65.7%. From 2000 to 2022. This is the data of Mint, and there has been this, as I had talked, that digital distraction, mental health issue, skill mismatch. These are the major challenges which youth is facing. So how we can, what will be the solution of this challenge? The major solution will be developed. The youth should have developed own resilience, purposeful life,
educate must there should be a proper education regarding this mental health, and there should be creativity and empathy for among the youth. And youth should not focused on the skills, they should be focused on the skills, not just over the degrees. So that is how we have so that is how we are done with the major topic of our today's talk. Now our seventh is the inspirational examples. Why I had mentioned this? Because as a youth we all should inspire from others, because I believe that if we will learn from others mistake, or if we will learn from other, then it is better to uplift ourselves in an efficient and effective manner. We can take the example of Malviya Inger, who is acid attack survivor. Currently, she is motivational speaker and UN advocate, which is a very big, very challenging task for her. But she did it because she saw a dream that she want to do certain thing. We can take the example of Afroz Shah, who is environmentalist, who started the world largest beach cleanup in Mumbai. And we, as our golden boy Neeraj Chopra, Olympic gold medalist, who saw the dream to become India as a in javelin as a gold medalist. So these are certain inspiring examples which help to understand that how we can inspire from him, and how we as a catalyst, how we as a youth can work on it, and can work on it and work over our ideas and innovations in a very effective manner. So at last, I would like to have certain activities. Uh, as you can see in the PPT, that this is my last portion, and I had prepared one special thing on the special day. So let's wait for that. Wait for a minute. I had prepared one page, which is written by me itself, to as a youth, to think critically, act compassionately, and lead fearlessly, to replace compassion with contribution, to use our energy not for division but for development, to be not just educated but enlightened citizen. So that is what I had written as a place for the youth who is sitting here. I hope you all got it, what the place basically means. And अंत में मैं अपनी एक कविता, मेरी एक प्रस्तुति है, एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है. वो कविता का शीर्षक है मैं नए भारत का चेहरा हूँ. इसमें नए भारत का चेहरा जो है वो मैं यूथ को मानता हूँ. तो कविता कुछ इस प्रकार से शुरू होती है. इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा हूँ, गंगा यमुना मेरी आंखें हैं, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ. मैं आज भी था, मैं कल भी हूँ, मैं नवयुग के अंदाज में हूँ. सारी दुनिया का घर मुझ में है, इस मिट्टी का आदर मुझ में है, मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ. अब चांद पर पांव जमाना है, अब चांद पर पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है. ना ठहरा था ना ठहरा हूँ, ना ठहरा था ना ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ. मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ. विज्ञान में, किसान में, हर वीर में, हर जवान में, मैं सीमाओं का पहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ. सो विद दैट नोट मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. धन्यवाद. Uh, thank you so much, Mr. Shaurya Pratap, for such a energetic and motivational and poetic ending. Thank you so much for such a wonderful presentation, for such a wonderful talk you have given today. And today's talk have made one thing, have reaffirmed one thing very clearly, that the youth stand at the very heart of transformation, whether the transformation is social or economical or cultural, and their capacity to question, innovate, and act makes them indispensable agents of change. So thank you so much for such a wonderful presentation today. And now we will take some. Uh,
I think Salinder mean to say take some questions. So, uh, hello, sorry. Okay. So here we are having some questions. In what ways are youth influencing social media narratives and public opinion? यूथ कैसे सोशल मीडिया और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर पाता है? सॉरी प्रताप। सो बेसिकली एक यूथ किस प्रकार से सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस कर पाता है, यही क्वेश्चन है ना सर? हाँ हाँ, यस यस। ओके सर। सो मतलब जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया से हम सब लोग अवेयर हैं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया में चीज़ें आती है, किस प्रकार से हमें हमें क्या चीज़ अपने हमें गेन करनी है, क्या चीज़ हम लोग को साइड करनी है। तो व्हाट आई बिलीव इज दैट कि आजकल का जो सोशल मीडिया है, तो वो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं काफ़ी सारी रॉन्ग न्यूज़ भी स्प्रेड करता है, काफ़ी सारी राइट न्यूज़ भी स्प्रेड करता है, जो अपने आप में एक डायलेमा रहता है यूथ के अंदर, हमारे अंदर, कि कौन सी न्यूज़ हमें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा इसमें कि वी शुड ऑलवेज थिंक दैट हमें सबसे पहले फैक्चुअल डेटास को वेरीफाई करना चाहिए, जिससे कि हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना केटर कर सके। अगर हमने एक बार वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ले ली, तो कहीं ना कहीं हम उसी चीज़ को पास ऑन करेंगे अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू केटर द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम राइट सोर्स। Uh, all right, all right. So, the next question which I'm taking is that although you have explained the negative aspect of that question, now how the digital literacy, जो digital literacy है वो किस तरीके से youth को empower कर सकती है, उसका क्या role है youth को empower करने का, digital literacy? We can take the example of GSTS itself. I see it as a digital literacy platform, because here each and every individual is coming and talking in one topic, which it is very important, because अगर आप कोई टॉक को सुन रहे हो, वो उसमें भी, जैसे कि मैंने भी अपनी टॉक प्रेजेंट की, इससे पहले भी काफ़ी सारी टॉक्स हुई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी हमें मिली है, हमें कुछ गेन मिला है, एक नॉलेज मिली है। तो हम लोग को बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी नॉलेज मिल रही है, उसको अगर हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे मैंने आज इस टॉपिक के ऊपर बात की, अगर कहीं ना कहीं, अगर जितने लोगों ने भी आज सुना अपना टाइम निकाल के, अगर उसी टॉक से कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो ये उनके लिए एक लिटरेसी का पार्ट हो गया। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो डिजिटल लिटरेसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर समय ऑफलाइन प्रेजेंट रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं ज़्यादातर ऑनलाइन को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि आप वहाँ से इजीली आप चीज़ों को मैनेज कर पाते हो टाइमली अकॉर्डिंगली, और सारी चीज़ें एक जगह से ही मैनेज्ड हो जाती हैं। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट एडवांटेज फॉर अस, डिजिटल लिटरेसी। All right. The last question which I'm taking is that how can India leverage its demographic dividend through youth-driven innovation? Okay, so basically question is how India's democracy. No, no, not democracy, not democracy. How can India leverage its demographic dividend through youth-driven innovation? So this is the Okay. question. सो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया 140 करोड़ का आबादी वाला देश है। सो हर एक के अंदर एक अपना इंडिविजुअल आइडिया, इनोवेटिव आइडिया और थॉट रहता है, और इसी चीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए मतलब हमें अपनी तरफ से तो स्टेप लेने ही है। उसी चीज़ को अपलिफ्ट कर रही है हमारी गवर्नमेंट भी। ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि स्किल इंडिया हो गया, फिर स्टार्टअप इंडिया हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है। और जैसे मैंने अभी एनसीसी में बताया, आइडिया इनोवेशन वाला एस्पेक्ट, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जो अपने आइडियाज़ और इनोवेशन जो यूथ के पास है, उसको एक
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और जिससे कि वो आइडिया जो है उसे एक प्रॉपर स्टेज मिले और उस प्लेटफॉर्म के जरिए वो अपने आइडिया को सबके पास पहुंचा पाए। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा परप्लेक्सिटी का, उसे एक प्लेटफॉर्म मिला। इवन एज मतलब मेरे हिसाब से शायद एयरटेल भी उसे वो करता है, अपने साथ स्पॉन्सर करता है, जिससे एक सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट मिल जाता है, जिससे कि इंडिया का एआई बूट को एक रेज मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, पर अगर हम लोग इन्हें बड़े वाइडर रेंज में देखें तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें वर्क करती हैं। Yes, definitely work करती हैं. So, thank you so much once again, Mr. Okay, before finally thanking you, Mr. Shaurya, one more question from our side, which is, how was your experience with Graduate Scholars Talk Series, both as a speaker and as a member of society? So basically, my experience, it was very great experience for me. I had learned lots of things for my society as a joint secretary of Manzil. It is a very great collaboration for us, and in future we will aware our members of society regarding GSTS, so that they can also talk on their own topic, what they think about their own perspective. It is a very great opportunity. जब मैंने इस आइडिया के बारे में सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब डॉक्टर मनीष सर को स्पेशली थैंक करना चाहूँगा कि जो जिन्होंने इस आइडिया को ना ही आइडिया समझ के अपने पास रखा, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। ऐसे कई सारी सोसाइटी, कई सारी चीजें बन जाती है, पर वो एक समय के बाद चीजें आगे नहीं बढ़ पाती है, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फेस्टिवल के टाइम पे भी टॉक सेशन हो रहा है, ये अपने आप में सच में बहुत बड़ी बात है। और एक इंडिविजुअल जो कोर टीम है, वो कोर टीम इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही है सबके साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। मतलब मेरे पर्सनल केस में मुझसे एकदम पॉजिटिवली कोऑर्डिनेट किया गया, प्रॉपर गाइडेंस मिला मुझे, कब मुझे क्या डेटा प्रोवाइड करना है, मेरी पीपीटी बन गई है कि नहीं, सारी चीज़ों का केयर टेकिंग कोर टीम के द्वारा किया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि एक और जीएसटीएस जो है वो इतने बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ों को कर पा रहा है, और वो भी कंसिस्टेंटली कर पा रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है, what I believe. So it was very literally a very great experience for me, and I really honor कि मैं यहाँ पर आज बैठ के आप सबके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ अपने टॉक सेशन में। और इसमें मैं डॉक्टर मनीष सर को बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, और जितने भी सारे मॉडरेटर्स थे उन सबका भी दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सर का, जिन्होंने इतने ध्यान से मेरे टॉक को सुना, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने यहाँ पर अपना टाइम दिया और इतने इतने महत्वपूर्ण सेलिब्रेशन के टाइम पे भी वो यहाँ पर आके मेरे टॉक को सुना। रियली अप्रिशिएटिंग। All right, thank you so much, Mr. Shaurya Pratap, for such a commendable presentation, and thank you so much once again. Now, moving ahead, I would like to invite our today's guest of honor once again for his final remarks over today's topic, over today's talk, and over this initiative. I would like to invite Mr. Naveen Kumar once again. Sir, please. Thank you so much. और am I audible right now? Yes, you're audible. हाँ Yes. पहली बात ये है कि जो आज टॉक सीरीज हुई, ये बहुत ज़्यादा ही नुएंस डेटा शौर्य प्रताप सिंह ने मतलब दिया, और सब यूथ के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात की कि यूथ के क्या क्या उन्होंने इन्वेंशन या इनोवेशंस किए, या क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, या क्या क्या प्रॉब्लम्स भी वो फेस करते हैं, और क्या उन्होंने चेंज किया है। तो ये बहुत नुएंस तरीके से इन्होंने मतलब अपने टॉपिक को डिफाइन किया, और दैट्स अप्रिशिएटेबल। और ये बहुत अच्छा था कि आज का जो टॉक सीरीज सेशन था, एक नए तरीके से हमें कुछ चीज़ों को जानने का मौका मिला। और जीएसटीएस भी एक यूथ को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और पिछले 4 साल से काफ़ी यंगर स्कॉलर्स यूथ जो हैं यहाँ पर आए और अपने अपने टॉपिक्स पे बात की, और काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस जो है एक नए रिसर्च के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। सो दैट्स वेरी अप्रिशिएटेबल ऑल्सो फॉर द जीएसटीएस। और मनीष सर की वजह से जो है ये अच्छा आज चल पा रहा है, और
उन्होंने सभी यूथ को कनेक्ट किया अपने से, और यूथ जो है सभी आकर यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूथ के पास काफी सारे आइडियाज है, बट उनके पास एक प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिलेगा उनको प्रेजेंट करने के लिए, तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि वो उनके मन में ही वो बातें रह जाएंगी जो वो एक प्लेटफॉर्म पे आके करना चाह रहे थे, वो उनसे कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। बट अब जैसे काफी सारी बातें शौर्य प्रताप ने की थी कि मतलब यूथ ने कुछ इनोवेशंस किए हैं, और एक चीज हम नोटिस करते हैं कि यूथ में एक कोट है, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जिसको बोलते हैं हम लोग। और वही यूथ ने कर दिखाया है, मतलब वही यूथ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज उनको जरूरी लग रही है उसी को उन्होंने इन्वेंट किया है, इसका इनोवेशन किया और उसको नए तरीके से फॉर्म किया, और जो आगे तक चलता रहे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बायजूस, या फिर कुछ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हो गए, या फिर कुछ जैसे ओला, उबर, ये नए नए ऐप एप्लीकेशन का जो है मतलब एक बनाया गया इनको, तो ये भी एक यूथ के द्वारा ही बनाया गया। उन्होंने इतना इनिशिएटिव किया कि क्योंकि आज के टाइम में ये सभी की जरूरत है। इवन हम लोग अगर कुछ ऑर्डर करते हैं, जस्ट ब्लिंकिट, जोमेटो, ये दीज आर दी ऐप कि जिनकी वजह से आज मतलब लोग आसानी से सब चीज़ अवेलेबल करा पा रहे हैं अपने पास। बट एक प्रॉब्लम ये भी है कि हर यूथ के पास एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटोर नहीं होगा तो यूथ जो है अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, जो उनके पास एक नए विचार हैं किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, वो उससे कहीं न कहीं वो पीछे छूट जाते हैं। तो मेंटोर एक होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी लाइफ में, और स्पेसिफिकली मेरे लिए अपनी लाइफ में भी डॉक्टर मनीष करमवार सर एज ए मेंटोर, एज प्रोफेसर, और उन्होंने एज इंस्पिरेशन और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने सपोर्ट किया और आगे कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग भी आगे बढ़ पा रहे हैं, मैं भी आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो उनके हर किसी यूथ के पास एक मेंटोरशिप होना चाहिए, मेंटोर होना चाहिए जिस तरह से। लेकिन आज का यूथ, मैं प्रॉब्लम्स की अगर बात करूँ उस बारे में, तो यूथ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो। फर्स्ट से जैसे बात की थी शौर्य प्रताप ने, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक हाईली जो है प्रॉब्लम्स बन चुका है यूथ के लिए, जिसमें कि मतलब उनसे निकलना बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम में टफेस्ट हो रहा है। बट फिर भी यूथ आगे बढ़ रहा है किसी न किसी तरीके से, कुछ ना कुछ आइडियाज़ को लेकर। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में बहुत ज़्यादा अब बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से यूथ जो है अपने आप को अनएम्प्लॉयबिलिटी से भी निकाल रहे हैं। कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं यूथ को फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी जो इंडियन यूथ हैं उनका ऑलमोस्ट जो सपना है, ड्रीम जॉब है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का है। चाहे वो एक नीट के एग्ज़ाम के लिए ले लीजिए, चाहे एसएससी के किसी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए। तो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को हम यूथ जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है जो लोग वहाँ तक जा रहे हैं, तो अगर जो नहीं कर पाए उसे अचीव, तो वो सब लोग मतलब उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी है, बट क्या है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन, काफ़ी सारे जो यूथ हैं उसमें कनेक्ट एफर्ट लगा रहे हैं करने के लिए, तो उस वजह से वो कहीं न कहीं रह जाते हैं। तो उसे इस तरह से लगता है कि हम यूथ को भी कुछ सेकंड ऑप्शंस भी लेकर चलने चाहिए, और उसको लेकर ताकि और हम आगे बढ़ें, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम, अपने जो भी हम चाहते हैं करना, उसको अचीव कर पाएँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा आज के लिए। और सबसे बड़ा थैंक्स जीएसटीएस का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं जीएसटीएस से 2021 से जैसे बताया था कि जब ये फाउंड किया गया था सर के द्वारा, तभी से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो गए हैं, और 5 ईयर्स हो जाएंगे 2026 के जनवरी, आई थिंक जनवरी फेब में। और साक्षर डिपार्टमेंट से भी मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ था, कॉलेज के टाइम से भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हम लिए ले रहे थे। मनीष सर काफ़ी सपोर्टिव हैं, और सब जानते हैं कि इतना ज़्यादा कर पाना ये भी बहुत टफेस्ट होता है, क्योंकि जैसे बात बात की शौर्य प्रताप सिंह ने कि कंसिस्टेंसी होना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि हर टाइम पर डिस्ट्रक्शन होना, हर टाइम पे हम चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं, प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं। आज के टाइम में बहुत ये ज़्यादा चल रहा है, लेकिन फिर भी इस चीज़ के बावजूद भी हम हैं। और मैं एट द लास्ट में कहना चाहूँगा कि सभी को विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, स्पेशली मनीष करमवार सर, आपको भी हैप्पी दिवाली सर। और इसी के साथ मैं डॉक्टर मनीष करमवार सर से बोलता हूँ, सर कुछ वर्ड दीजिए आप भी। Uh, thank you so much, Mr. Naveen, for your words, for your suggestions, and for your appreciations as well. आप हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हैं और उम्मीद है कि आगे भी
इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार हमारी टीम की तरफ से आज हमारे साथ बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर जुड़ने के लिए। Ab proceeding the session further, I would like to invite our next speaker for To Be Sunday, Miss Kajal. She is a postgraduate scholar from Department of Hindi, University of Delhi. और उनका जो विषय होगा, जिस विषय पर वो अगले इतवार को अपनी अपनी बात रखेंगे, वो विषय है हिंदी साहित्य में स्त्री अस्मिता का प्रतिनिधित्व। सो मिस काजल, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑडियंस के बीच रख सकती हैं। नमस्कार सबको। और मैं अपनी जो नेक्स्ट स्पीक देने के लिए तैयार हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ मुख्य बिंदु और मुख्य पहलुओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। मैं काजल कुमारी दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक और प्रास्नातक की पढ़ाई हिंदी विभाग से पूरी की हूँ। कमला नेहरू कॉलेज मेरे GSTS परिचर्चा का विषय बहुत ही जीवंत और गंभीर है समाज के लिए, जो इस प्रकार है: स्त्री अस्मिता और हिंदी साहित्य। इस परिचर्चा के बारे में कुछ मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। प्रथम बिंदु परिचय, स्त्री अस्मिता और हिंदी साहित्य के मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालना। जो दूसरी बिंदु है वो इस प्रकार है: स्त्री अस्मिता और हिंदी साहित्य की भूमिका, इतिहास, वर्तमान, भविष्य की परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य को स्त्री अस्मिता से जोड़ना। तीसरा बिंदु, प्राचीन काल के महत्वपूर्ण ग्रंथ। प्राचीन काल के महत्वपूर्ण ग्रंथों में स्त्री अस्मिता और हिंदी साहित्य, मनुस्मृति, महाभारत, रामायण के अनसुनी पहलुओं को उजागर करना। चौथा, गद्य और पद। गद्य और पद के परिप्रेक्ष्य में स्त्री अस्मिता और हिंदी साहित्य को उजागर करना। उपन्यास, कहानी, कविता, आत्मकथा, निबंध, नाटक, इन सारी विधाओं में स्त्री की अस्मिता को कुछ परिप्रेक्ष्य में अनकही बातों को सामने रखना। पांचवा बिंदु, कुछ अनकहे अल्फाज, स्त्री की कहानी, उनकी ही जुबानी। छठा बिंदु है वर्तमान युग में स्त्रियों की भूमिका। वर्तमान में हम उम्र लड़कियों की सोच पर दृष्टिकोण डालना एवं मेरी स्वरचित पुस्तक अल्फाजों का सफरनामा, जो एक कविता संग्रह है, वो भी एक स्त्री अस्मिता को उजागर करती है, उससे सामने रखना। और मेरी एक अन्य पुस्तक जो स्वरचित है, उपन्यास चीख, उसके जरिए जो मैंने महसूस किया है और जो आज के आने वाली युवा पीढ़ी है, उनको सामने लाना। अतः अंत में निष्कर्ष, कुछ प्रश्न खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए सोचने के विषय के रूप में सामने रखना। धन्यवाद।